Hello, hi, good evening. Welcome to Oliveboard. This is Aditya. I hope I'm audible and visible to all of you guys clearly. Check कर लीजिए पहले और everything is fine. We can start the session immediately after that. All well? All of you are fit and fine? चलिए. This is a session especially dedicated for your upcoming NICL examination. Just I need a little confirmation in the chat box so I can start the session. Mostly what I'm going to do today in this session, what is my focus in this session will be based on most important insurance awareness MCQs related to IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India, and the other insurance companies which are there in the news from January till June. So I'll try to cover up. This much is enough to cover for the NICL examination, for the mains examination. So whatever the insurance companies are there in the news and IRDI is there in news, that all the topic I'll try to cover up in the next 1 hour. Okay. So it is going to be important session for all the people, those who are going to attend any insurance sector examination in the upcoming days, they are expected, especially in ICL AO. So let's start the session, guys. One important information I'll give you today. That is your banking super elite is available at the best price, so you can connect with me over the Telegram. I'll be able to give you the best available price for the banking super elite. Here you can attend the classes of not only banking awareness, including insurance awareness, mock test, everything is included into this. My Telegram ID is Aditya Sir GA. This is my Telegram ID. So connect with me over the Telegram. I'll be able to give you the best possible offer for the purpose of going through with the super elite. चलिए, let's start the session. बेटा जनवरी से जून पूरा कोशिश कर रहा हूं मैं कवर करने की, जैन टू जून 2024. So most important news regarding IRDI, insurance sector, and few news which are related to the financial market and Reserve Bank of India, that also covered into this session. Okay, so starting with the question number 1. IRDI asked insurance company to seek approval from the appointment of board of the chairpersons. Existing chairperson have until when they need to comply the new regulation. So IRDI ने एक rule बनाया है that from now onwards every chairperson of any insurance company need to take pre-approval. Board need to take pre-approval from the IRDI for the appointment of chairperson of the board of insurance company. ठीक है, जो अभी करंट में आपके chairpersons already appointed हैं, they will be able to enjoy their seat till 31st March 2026. एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से सुन लीजिए. चेयरमैन जो भी इंश्योरेंस कंपनी के होंगे, नए चेयरपर्सन जिनका अपॉइंटमेंट होना है, उनके अपॉइंटमेंट के लिए पहले अप्रूवल लेना होगा IRDI से. अभी तक ऐसा रूल नहीं था, बट अब बन गया है. जो ऑलरेडी चेयरमैन की पोजीशन पर हैं, वो चेयरमैन रह सकते हैं. कब तक? 31 मार्च 2026 तक वो चेयरपर्सन रह सकते हैं. उसके बाद अगर उनको कंटिन्यू करना है तो उनको IRDI का अप्रूवल लेना पड़ेगा. बोलो, आंसर क्लियर है? यस और नो? हाँ, IRDI क्लियर है? यस और नो? अगला पॉइंट नेक्स्ट है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट IRDAI रेगुलेशन फॉर द श्योरिटी बॉन्ड. बेटा मैं स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए एक सेपरेट सेशन कर दूंगा, जहां पर स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस जो आप मांग रहे हैं, जैसे कि वो आपसे पूछ लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में रिगार्डिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस, so that I'll be able to do separately. Like if they will be asking you that what is the meaning of a particular period where company have time to investigate over the policy, right? तो ऐसे टर्मिनोलॉजीज अगर आपसे पूछे जाते हैं, या को इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ऐसे वाले जो टर्म्स हैं वो मैं एक सेपरेट सेशन में पूरा आपका इंश्योरेंस एमसीक्यूज के नाम से कर दूंगा एक सेशन ऑन मंडे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट IRDI रेगुलेशन अबाउट द श्योरिटी बॉन्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Solvency requirement of the surety bond have been decreased by IRDI from 1.87 times to 1.2 times. ये wrong है. It is 1.5 times now, right? It is 1.5 times now. So statement 1 is wrong. Additionally, previously 30% exposure limit of the contract written each underwritten by each insurer have been lifted. तो ये भी पहले 30% का कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर क्या था, गाइडलाइन था, नॉट 50%. तो स्टेटमेंट 2 is also wrong.
Surety bond is a critical mitigating tool offering protection against the potential loss related to the contract or non performance. So basically it is related to infrastructure. किस चीज से related होता है ये आपका infrastructure related आपका security bond है. Infrastructure sector से related आपका security bond है. Statement number 3 is correct. Statement number 1 and 2 both are wrong. पहला और दूसरा दोनों गलत हैं. IRDAI ने सॉल्वेंसी रेशियो रिक्वायरमेंट कम किया है. प्रीवियसली इट वाज 1.87 टाइम्स, अब इसको कम करके 1.5 टाइम्स कर दिया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन. कम बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या NICL की? चलो कोई नहीं, मैं आज का सेशन तो कंप्लीट करता हूं, आगे वाले पर विचार करेंगे कि टाइम इतना हम स्पेंड करें कि नहीं करें. So Mahindra and Mahindra Financial Services, a prominent player in India, non-bank financial sector, have secured a corporate agency license from which of the following regulator? तो अभी Mahindra and Mahindra को अभी recently non-bank financial sector में इनको corporate agency license मिला है. Corporate agency license का meaning है this company will be able to, this Mahindra and Mahindra Financial Services will be able to offer life insurance product, also non-life insurance product, also reinsurance product. So they will be able to offer these products. ये ऑफर कर पाएंगे. तो अप्रूवल दिया है किसने? IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. किस चीज का अप्रूवल है ये? इट इज अप्रूवल ऑफ वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट एजेंसी, कॉर्पोरेट एजेंट के फॉर्म में काम करने का इन द इंश्योरेंस सेक्टर. नेक्स्ट वन, IRDAI issues a new guideline that reduce the engagement period of statutory auditor in the insurance company from 10 years to how many years? Every insurance company need to change their auditor according to new norms now in every how many years? लगभग कितने सालों में हर एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना ऑडिटर चेंज करना होगा. So previously this duration was 10 year, now this duration is 4 years. तो अब हर 4 साल में एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना क्या चेंज करना है? ऑडिटर चेंज करना है. ये सिंपल सा पॉइंट है. करंट में IRDAI चेयरपर्सन है मिस्टर देबाशीष पांडा. हैदराबाद तेलंगाना इज द हेडक्वार्टर ऑफ द company. IRDAI imposed the penalty of how much amount of rupee on go digit general insurance for non-disclosure of conversion ratio of compulsory convertible preferential. Recently IRDAI ने फाइन इम्पोज किया है. रिसेंटली IRDAI ने फाइन इम्पोज किया है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के ऊपर because they have not issues or given the proper detail to IRDAI regarding the compulsory convertible preferential. This company came to IPO few days before. इन्होंने कुछ दिन पहले IPO लॉन्च किया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. मींस कंपनी came to stock market. So stock market में वो आए, they issues few convertible preference shares also which will be able to convert it into debentures. मतलब ये आप समझो इक्विटी और डेट को कंफ्यूजिंग रखा इन्होंने क्लियरली IRDAI को आइडिया नहीं दिया. फॉर दिस पर्पस IRDAI इम्पोज द फाइन ऑफ 1 CR, 1 करोड़ रुपए का फाइन जो है IRDAI ने इनके ऊपर इम्पोज किया है. आगे चलते हैं. IRDAI की बात करें, सो विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ IRDAI? ये क्वेश्चन बन सकता है. किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था फॉर्मेशन ऑफ IRDAI का? So Insurance Regulatory Development Authority of India formed according to the Act of 1999. It was formed on the recommendation of R.N. Malhotra Committee. Very important point. So IRDAI was formed according to the recommendation of R.N. Malhotra Committee, retired former Governor of Reserve Bank of India. IRDAI formed in the year 2000. Mr. Debashish Panda sir is the current chairperson of IRDAI, who was former financial secretary of India, service secretary of India. IRDAI headquarter was initially created in Delhi, but now it is shifted to Hyderabad. अभी headquarter कहां पर है IRDAI का? तो हैदराबाद में लोकेटेड है. पॉइंट क्लियर है. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अच्छा, नॉट ओनली IRDAI, सेबी हो गया और RBI हो गया. इन तीनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट, बॉन्ड है, कैपिटल्स है, इक्विटी है, डिबेंचर्स है, these questions usually come in the insurance sector examinations. SEBI slash the face value
of non-convertible debenture through the private placement to how much amount of rupee? Correct answer है 10,000 rupee. So non-convertible debenture, the cost of non-convertible debenture was previously 1 lakh rupee. If I wanted to invest in a non-convertible debenture previously, I need to have 1 lakh rupee in my pocket to make investment. अभी इसको कम करके कितना कर दिया गया? 10,000 रुपए. रिपीट कर देता हूं, सेबी ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो 1 लाख रुपए हुआ करता था, इसको डिक्रीज करके कितना कर दिया है? इसको डिक्रीज करके कर दिया है 10,000 रुपए. पॉइंट क्लियर है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट बाय विच कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. पैसा उठाती है कंपनीज मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ लोन. Next is SEBI allow non-resident Indians to invest up to how much percent in the global fund located in the gift city Gujarat. तो correct answer है 100%. 100% का previous investment limit was 50%. Now this limit increased to 100%. So जो आपके global fund इंडिया में listed हैं, जो FII foreign institutional investors listed हैं, in that fund, in the global fund, NRIs can now invest up to 100%. Consider the correct statement about SEBI news recently. Securities and Exchange Board of India recently decreased the deliverable period of commodity derivative from previous 5 days to 2 days. It will be applicable from 1st July 2025. The primary goal of SEBI is to improve the liquidity in the market by decreasing the delivery time of the derivative. तो डेरिवेटिव होते हैं आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. पहले जब हम फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते थे, सो इट वाज क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट इन 5 डेज. अभी सेबी ने इसको 5 डेज से डिक्रीज करके कितना कर दिया है? 3 डेज कर दिया है. 3 डेज. सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग ऑल्सो, if I am investing or if I am disinvesting in my future forward contract, my money will get credited back to my account in 3 days instead of 5 days. तो ये 2 days गलत है, यहां पर 3 days होगा. And this will be applicable from 1st July 2024 से applicable है, not next year. So this is the correct statement. Statement number 3. फर्स्ट और सेकंड आपके wrong हो गए. I hope statement clear. According to the recent report of IRDAI, the penetration dropped marginally to how much percent in the financial year 23-24. So as per the recent data in the insurance sector, we have the data of the financial year 22-23. 22-23 का data है हमारे पास अभी तक available. We don't have data of 23-24 as of now. अभी तक नहीं है as per IRDAI, and this is the current data. So according to the recent report of IRDAI, life insurance penetration dropped marginally how much percent in 20-23? 3% से कम हो गया है आपका life insurance का penetration. So IRDAI said that life insurance penetration marginalized dropped to 3%. Previously it was 3.2%. पहले 3.2% था, यहां से कम होकर कितने परसेंट पर आ गया? 3% पर आ गया. So previously it was 3.2% in India, now came down to 3%. अब कितने परसेंट पर आ गया? 3% पर आ गया. Overall insurance penetration in India decreased to 4%. So overall की बात करें, so previously it was 4.2%, came down to 4% overall, including life insurance and non-life insurance. While non-life insurance penetration in India is stagnant at 1%. तो non-life insurance जो है आपका car insurance, home insurance, in that category, it is still at 1%. अभी भी 1% का 1% है, ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है. तो 3 स्टेटमेंट बन रहा है आपके पास. लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पेनिट्रेशन रेट इज previously 3.2, now 3%. Overall 4.2, now 4%. Non-life insurance 1%, it was 1% current also. Okay, this is the point. According to the Swiss Re Institute report, the total premium in India in the insurance sector expected to increase average rate of how much percent in the real term during the year 2024 to 2028. So when you will be going for NICL AO interview and they will ask you why you want to come to the insurance sector, why not you want to go to the banking industry, why insurance sector you have decided, such type of data will be helpful for you to create your answer during the interview. You can say that, sir, as per the recent report issues by Swiss Re, which is one of the rating agency,
This company have given the data that insurance sector premium growth in India will be around 7.1% during 2024 to 2028. It is a clear expectation that the insurance sector growth in India will be very high. Compared to the global rate of 2.4%, Indian insurance market will be increasing by 7.1% in the next 4-year duration as per the report. So data be helpful for written as well as for interview. So sir, it is going to be one of the growing sector in India. That is why I want to join this sector for my growth as well. तो ऐसे आंसर आपको बनाना सीखना पड़ेगा जब आप NICL इंटरव्यू के लिए जाएंगे. Which of the following company has unveiled Shisham India's first large language module designed for the banking, financial sector and insurance sector? तो अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया शीसीम. इट इज इंडिया फर्स्ट लैंग्वेज मॉड्यूल डिजाइन फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर. करेक्ट आंसर है सेतु. सेतु ने बनाया है इसको. करेक्ट आंसर है सेतु. तो सेतु ने इसको क्रिएट किया है. नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विथ एरोम एन एसेट प्रोटेक्शन फर्म to provide the comprehensive insurance coverage for their customers on their valuables. मतलब जो भी प्रोडक्ट आपका लॉकर में रखा गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है. सो दिस इज लॉन्च्ड in support of a company called Arum, launched by Tata AIG Insurance. Tata AIG Insurance ने लॉन्च किया है. So Tata AIG Insurance Tata AIG collaborated with Arum to launch comprehensive insurance coverage for their customer for their valuables. Up to 25 lakh rupee insurance facility will be available. Which insurance company have launched India's first satellite in orbit थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी? इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? किस कंपनी ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है टाटा एआईजी इंश्योरेंस. करेक्ट आंसर है टाटा एआईजी इंश्योरेंस. यतेंद्र बोल रहे हैं जिस लेवल से कॉन्फिडेंस में आपने बोला है और वो कोई क्वेश्चन पुट करें. अच्छा. अच्छा, मैंने जिस कॉन्फिडेंस से बोला है आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं बोल पाओगे. वो होता है, प्रैक्टिस के साथ आएगा. इंटरव्यू अभी थोड़ा सा दूर है. पहले मेंस क्लियर कर लीजिए, फिर इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे. ठीक है, मुझसे कनेक्टेड रहिए टेलीग्राम पर. आदित्य सर ओबी इज माय टेलीग्राम आईडी. आदित्य सर जीए इज माय टेलीग्राम आईडी. यू कैन फाइंड मी ओवर द टेलीग्राम विद दिस आईडी. और जीए जीनियस सर्च कर लीजिएगा. जीए जीनियस ये मेरा ग्रुप है. यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा. पीडीएफ ऑलिवबोर्ड के एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगा, तो वहां से भी ले सकते हैं आप. आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये वाला इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एआईजी ने लॉन्च किया है इसको. आगे आ जाइए. थॉमस कुक इंडिया हैज लॉन्च्ड विच डिजिटल सर्विस दैट ब्रिंग ease and efficiency in the international money transfer. Ease and efficiency in the international money transfer. तो थॉमस कुक इंडिया ने अभी रिसेंटली टीसी पे फैसिलिटी लॉन्च किया है. ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं इंश्योरेंस के एग्जाम में. टीसी पे फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय थॉमस कुक इंडिया रिसेंटली फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और फॉर द पर्पस ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस के लिए. विच कंपनी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अब फॉरेक्स घर बैठे. एक और क्वेश्चन है. अब फॉरेक्स घर बैठे फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग पेपरलेस टू बाय फॉरेक्स फॉरेन करेंसी विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ होम. घर बैठे बैठे आप फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो थॉमस कुक रिसेंटली लॉन्च द फैसिलिटी कॉल्ड अब फॉरेक्स घर बैठे. सो इट इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय थॉमस कुक. थॉमस कुक ने लॉन्च किया है. इट इज अ कंपनी विच इज registered in India as a company of Mumbai. So Mumbai based company आपका Thomas Cook. It is an Indian travel agency headquarter located in Mumbai and it's a very old company in the travel industry. It is providing lots of different facilities at present. अच्छा, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू गेट लाइक अब फॉरेक्स घर बैठे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. So you may get the complete home loan facility launched by which company? L&T Finance ने launch किया है. After that
ULIP facility recently fund based distributor payout, that from the ULIP, unit link investment plan, in future when your investment plan, when your equity will be increasing, when your investment will be increasing, from the investment, not only customer will going to get, the investor is going to get the benefit, your broker will also get the benefit out of this. तो आपका जो एजेंट होगा, ब्रोकर होगा, उसको भी टाइम टू टाइम फ्यूचर में भी उससे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये फैसिलिटी अभी लॉन्च किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट है। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी लाइफ। Yes Bank collaborated with ANQ to launch PIPHI credit card. AU Small Finance Bank have launched Sponge credit card facility and credit card NOMO facility, no missing out. नाबार्ड ने लॉन्च किया है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030। तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज आपके करवा पाऊं एज क्विक एज पॉसिबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड अ हाइक इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in the pension fund management under what percentage under the national pension scheme? So pension fund management में FDI का लिमिट कितना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So limit of FDI in the pension fund management is 74%. Previously it was 49%, पहले 49% था, यहां से इंक्रीज करके इसको कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनपीएस जो है इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया में 2004 में for the government employees. 2009 it was made open for all. Now the companies, those who are offering the national pension scheme, in that companies FDI limit is 74%. तो इन कंपनीज में FDI का लिमिट कितना है, 74% है। तो आपका एनपीएस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2004 को। इट वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी इसको ऑफर करता है अभी रिसेंटली। एंड एनपीएस फैसिलिटी में जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको अवेलेबल होते हैं 80 में। 80 में इंश्योरेंस सेक्टर अट्रैक्टेड मैसिव 54,000 करोड़ रुपए इन द लास्ट 9 years. What is the limit of insurance FDI in the insurance sector? इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का लिमिट कितना है? दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी डायरेक्टली आ सकता है। That as per the recent data issues by Government of India, what is the FDI attracted by the insurance sector in the last 9 years? पिछले 9 वर्षों में FDI कितना आया है इंश्योरेंस सेक्टर में? तो करेक्ट आंसर बनेगा 54,000 करोड़ was the FDI in the last 9 years in the insurance sector. और इंश्योरेंस सेक्टर में आपका FDI कितना परसेंट है? 74% है। So what is the percentage? What is the percentage of FDI in the insurance sector? Correct answer है 74%. 74% है ये। Clear है point? So FDI limit increased to 49% in 2015, then 74% in 2021. One more point. In case of insurance intermediate means insurance broking firm, insurance agencies, in that area it is 100%. तो इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के केस में जो आपका एफडीआई का लिमिट है वो है आपका 100%, intermediate. But in case of insurance company, it is still 74%. Which insurance company became the first life insurer in India to have 74% stake from the foreign shareholders? Correct answer है आपके पास Aegis Life Insurance. It is the first insurance company in India which is owned by a foreigner. फॉरेन ओन्ड पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंडिया की कौन सी है? सो एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गेट हाउ मच डिविडेंड फ्रॉम एलआईसी? रिसेंटली एलआईसी ने अनाउंस किया वो डिविडेंड देने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी गेटिंग द डिविडेंड ऑफ 3,662 करोड़ रुपए फ्रॉम एलआईसी। 3,662 करोड़ रुपए का एफडी का डिविडेंड मिल रहा है एलआईसी से। अगर आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो आरबीआई इज गोइंग टू गिव द डिविडेंड ऑफ 2.11 लाख करोड़। दिस इज द डिविडेंड विच इज शेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसबीआई ने डिविडेंड शेयर किया है कितने का? 6959 करोड़ का। वेरी गुड, 6959 करोड़ इज द डिविडेंड शेयर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये हो गए आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे आ जाइए। सो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिड्यूस्ड इट्स शेयर होल्डिंग इन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड टू हाउ मच परसेंट? पहले कितना परसेंट था, अभी कितना परसेंट है? LIC ने अभी रिसेंटली BHEL में अपना शेयर होल्डिंग क्या किया, डिक्रीज किया है। Previously it was 11.7%, now it came down to 9.6%. So 11.7% से डिक्रीज करके 9.6% कर दिया है। LIC ने अपना शेयर होल्डिंग इन विच कंपनी? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Life Insurance Corporation of India board have approved acquiring up to how much percent stake in a company promoted by NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये एक्वायर करने जा रहे हैं अप टू 10%, अप टू 10%, अप टू 10% इन अ कंपनी विच इज प्रमोटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की प्रमोटेड कंपनी है, अ न्यू कंपनी। इन दैट कंपनी LIC विल हैव 10% इक्विटी। 10% का इक्विटी जो है वो LIC लेने जा रहा है इस कंपनी में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। So company will be this one RMBS, Residential Mortgage Backed Security. This is the name of company. It is mainly backed by NHB. NHB इसका main owner है। 10% equity will be owned by LIC. LIC का होगा इसमें 10% का equity. Which insurance company recently got the certificate of registration to act as a corporate agent, composite agent by IRDAI? IRDAI ने रिसेंटली इनमें से किस कंपनी को, IRDAI ने रिसेंटली इसमें से किस कंपनी को प्रोवाइड किया है कंपोजिट एजेंट का लाइसेंस रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर है अर्का, अर्का फिनकैप लिमिटेड, अर्का फिनकैप लिमिटेड करेक्ट है, अर्का फिनकैप लिमिटेड। सो अर्का फिनकैप लिमिटेड recently got the license of corporate agent or corporate agency license from the IRDAI. Now government of India recently introduced a new number series for the purpose of getting the service or transitional call from the organizations like IRDAI, PFRDA, RBI, SEBI. Such type of calls will be coming from a series called 160. So 160 is going to be the series. ये वो सीरीज होगा जिस सीरीज से आने वाले दिन में आपको पास कॉल आएंगे RBI से, SEBI से, PFRDA एंड IRDAI से। तो IRDAI कॉल also you are going to get from the series called 1601. So it will be starting from 1616. ठीक है। Which bank and Bajaj Alliance recently collaborated for the purpose of Bank Assurance Pact? तो Bajaj Alliance General Insurance ने collaboration किया है किस बैंक के साथ में for the purpose of Bank Assurance Pact? Correct answer है Axis Bank. Axis Bank and Bajaj Alliance collaborated for the purpose of bank assurance partnership recently. दोनों का collaboration हुआ है। Canara Bank have approved initiating the process of diluting how much percent stake in Canara HSBC Life Insurance. In Canara HSBC Life Insurance, for the IPO purpose, Canara Bank is going to sell 14.5%. तो IPO आ रहा है किस कंपनी का? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का। दिस कंपनी इज कमिंग विद द IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन द स्टॉक मार्केट। 14.5% विल बी डाइल्यूटेड बाय कैनरा बैंक। कैनरा बैंक डाइल्यूट करेगा 14.5%। रिसेंटली इसके अलावा भी एक बैंक ने अनाउंस किया था, अगर किसी को याद हो, 14.5 तो कैनरा का है, इसके अलावा किस बैंक ने अनाउंस किया है? रिसेंटली कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक have done the corporate agency pact with ICICI Lombard General Insurance. So Capital Small Finance Bank was the first small finance bank in India, and this small finance bank recently collaborated with ICICI Lombard General Insurance for the Bank Assurance Pact. So Capital Small Finance Bank headquarter located in Jalandhar. Jalandhar में इनका headquarter located है अभी recently. ठीक है, एक और क्वेश्चन है। So Punjab National Bank announced disinvesting how much percent stake in Canara HSBC Life Insurance. तो Canara HSBC Life Insurance में PNB ने अनाउंस किया है 10%, and Canara Bank announced 14.5%. तो 14.5% का डाइल्यूशन कर रहा है कैनरा बैंक। 10% का डाइल्यूशन अनाउंस किया है किसने? 10% का डाइल्यूशन अनाउंस किया है किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने, PNB ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव गिवन द green signal to Zurich Insurance Company acquisition how much percent of stake in Kotak Mahindra General Insurance Company?
सो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने परसेंट का स्टैक अभी अप्रूव कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, because it is owned by Kotak Mahindra Bank. That is why the approval was required from RBI. So RBI approved the acquisition of 70% in Kotak Mahindra General Insurance Company. It will be acquired by Zurich Insurance Company. So this is going to be the second insurance company in India which is owned by a foreign entity. भारत की दूसरी कंपनी बन जाएगी जो कि एक foreign entity owned होगी after Aegis. Who has taken the additional charge of the Director General of Employee State Insurance Corporation? ESIC का charge अभी किसने लिया है? ESIC is one of the very important organization in the insurance sector. So ESIC additional charge have been given to Mr. Kamal Kishore Swan. Mr. Kamal Kishore Swan has taken the charge or additional charge of Director of ESIC. ESIC is the statutory organization. It work under which of the following ministry? तो ESIC जो है आपका कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, अंडर विच मिनिस्ट्री दिस ईएसआईसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन डू वर्क? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो ईएसआईसी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. मिस्टर भूपेंद्र यादव सर इसके कैबिनेट मिनिस्टर थे अभी तक, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट था. अब चार्ज दे दिया है किसको? मनसुख मंडाविया को. मिस्टर मनसुख मंडाविया, फॉर्मर मनसुख मंडाविया, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो हमारे पहले हेल्थ मिनिस्टर थे मंडाविया साहब, इनको चार्ज मिल गया है किस चीज का? इनको चार्ज मिल गया है आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग. सर विल इंश्योरेंस अवेयरनेस विल आल्सो हेल्प इन एयू स्पेशलिस्ट मोस्टली हिंदी राजभाषा ऑफिसर. पुष्कर, एक्चुअली आई हैव नॉट चेक्ड प्रॉपरली. I can't give the information until unless I have done the research over it. तो मैंने चेक नहीं किया आपकी हिंदी राजभाषा का पहला पेपर, पहले पेपर्स कैसे आए हुए हैं. तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, एक बार टेलीग्राम पर मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा उसके बाद चेक करके. अभी तो मैंने नहीं देखा है. मेरा ऑब्जेक्टिव था जर्नलिस्ट के लिए आज का सेशन रखना. ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So Employee State Insurance Corporation was formed on which of the following date? Correct answer है 24th of February 1952 को फॉर्म हुआ था. It was inaugurated by the Prime Minister of that time, पंडित जवाहरलाल नेहरू. Employee State Insurance Corporation was registered under which of the following act? So ESIC registered under the Act of 1948. ये रजिस्टर्ड है आपके एक्ट ऑफ 1948 में. 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी. 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी. ठीक है, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज बीन गिवन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर्स. अभी हाल ही में कौन सा रेगुलेटर है इंडिया से जिनको बेस्ट कंडक्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड दिया गया है? वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर इन इंडिया इन अमंग द रेगुलेटर कैटेगरी. सो दिस अवार्ड वाज गिवन टू सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Main reason to give this award to SEBI was T+1 settlement which is implemented by SEBI. Transaction day plus 1 day settlement implemented by SEBI. SEBI became first regulator or India became first nation in the world to adopt T+1. Other nations are still using T+3, T+4. Meaning of T+1 is today I am buying the equity, by tomorrow I'll get the delivery of that equity in my account. Today I am selling my equity, by tomorrow I'll get the money in my account. Even SEBI started working on T+0 also. SEBI T+0 पर भी काम कर रहा है. Recently, which company partnered with Mahindra and Mahindra Financial Services to offer life insurance solution to the customer? Correct answer है Kotak Mahindra Life Insurance Company. तो Kotak Mahindra Life Insurance Company ने collaboration किया है Mahindra and Mahindra Financial Services के साथ to offer the life insurance product to the customer. Which company recently started accepting premium payment in a form of central bank digital currency? Important question हो गया. So central bank digital currency will be accepted in the form of premium payment of the insurance. So it is started by ICICI Prudential Life Insurance. ICICI Prudential Life Insurance ने start किया है CBDC payment को accept करना.
CBDC was launched in India in two format. One was wholesale. So wholesale CBDC was launched and retail CBDC was launched. तो CBDC आपका wholesale launch हुआ था नवंबर 2022 में एंड रिटेल वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2022. ये आपके नवंबर और दिसंबर में लॉन्च हुए थे. ESEF Small Finance Bank has decided to discontinue the services of business correspondent with ESEF Ashwarya, that is Swaswarya Multi-State Agro Cooperative Society, where is the headquarter of ESEF? Correct answer है Thrissur, Kerala is the headquarter. Recently, Namdev Finvest, important है, a Jaipur-based NBFC entered into the strategic alliance with which of the following insurance company for offering the financial solution, comprehensive financial solution. कि भाई हम आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, with loan we will also offer insurance. आपको कार लोन चाहिए, with the car loan, car insurance will be available. So for this purpose, this Namdev Finvest have done the collaboration with Bajaj Alliance General Insurance. इनका collaboration किसके साथ हुआ है? Bajaj Alliance General Insurance के साथ में collaboration हुआ है. Namdev Finvest is a Jaipur-based company. It is a finance company. This company done the collaboration with Bajaj Alliance. आगे आ जाइए. Which insurance company have offered 15% lifetime discount for the women on all the premium for best selling term insurance called I Protect Smart? I Protect Smart जो है, इसका I जो है ये आपको एक हिंट देता है टू आंसर योर क्वेश्चन इवन यू डोंट नो द आंसर. अगर नहीं भी पता है तो ये I आपको हिंट करेगा कि आंसर इनमें से क्या हो सकता है. तो करेक्ट आंसर है I Protect Smart is the product of ICICI Prudential, like iMobile or multiple facilities launched by ICICI Bank or ICICI Prudential, starting with I. तो I Protect Smart is the product of ICICI Prudential. कितना परसेंट का ऑफर डिस्काउंट दे रहे हैं? 15% डिस्काउंट अवेलेबल फॉर द वुमेन ऑन ऑल द प्रीमियम in India. Next question है आपके पास. Who has been selected as the chairperson CMD of New India Assurance Company Limited? So New India Assurance Company Limited NIA, which is a your domestic systematically important insurer in India. So Girja Subramaniam ma'am has been appointed recently. Who has been appointed as the CMD of United India Insurance Company Limited? So Mr. Bhupesh Sushil Rahul appointed as the CMD of United India Insurance Company Limited. Next one. Which general insurance company have entered into the strategic partnership with the Policy Bazaar to offer the product on the platform? Policy Bazaar के साथ में भी हाल ही में collaboration जो है वो किस कंपनी का हुआ है? So the collaboration done by ICICI Lombard General Insurance. So now you will be able to see the ICICI Lombard General Insurance recommendations on the top. They will be offering, pitching the product of ICICI Prudential General Insurance compared to the other insurance company on the Policy Bazaar प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन हुआ है. ICICI प्रूडेंशियल का हेडक्वार्टर है मुंबई में. संजीव मंत्री जो है CMD है. स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड recently collaborated with which of the following platform for offering Star Comprehensive Insurance Policy? Star Comprehensive Insurance Policy को ऑफर करने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ में हाल ही में कोलैबोरेशन किया? स्टार एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने. तो करेक्ट आंसर है फोन पे. दे हैव डन द कोलैबोरेशन विद फोन पे. तो स्टार हेल्थ का कोलैबोरेशन हुआ है फोन पे पर. इफ यू विल ओपन द फोन पे एप्लीकेशन यू विल गेट द insurance product offered by the Star Health Insurance. Next है, which bank signed MOU with Medi Assistant Health Services Limited to enhance the healthcare accessibility, affordability of its product to the customer? So अभी recently collaboration हुआ है Medi Assist Healthcare का. Medi Assist Healthcare have done the collaboration with Canara Bank. In the branches of Canara Bank, now the existing customers of Canara Bank will be able to get the better facility from Medi Assist Health Services. So if they want to take the facility of health insurance, this Medi Assist Healthcare Services will be offering the facility. Apart from that, in case of their Hoppy Cash, means their insurance facility goes beyond the expenditure limit. In that case, Canara Bank will be offering the immediate finance. तो तुरंत में लोन भी ऑफर करेगा यहाँ पर कैनरा बैंक. तो दोनों कंपनीज का कोलैबोरेशन हुआ. बैंक का कोलैबोरेशन है इंश्योरेंस के साथ.
Magma HDI General Insurance partnered with which small finance bank to offer the health insurance facility in India? Correct answer है Magma HDI General Insurance collaborated with सूर्योदय Small Finance Bank. तो इनका collaboration हुआ किसके साथ? सूर्योदय Small Finance Bank के साथ में collaboration हुआ है. Which company launched the premium payment service on its WhatsApp platform, making first ever launch such type of facility in the insurance sector? Now in the insurance sector, a facility is available on the WhatsApp. You can make the payment of the insurance premium. Even the payment will be available in the form of central bank digital currency if you want to make. तो CBDC के फॉर्म में भी पेमेंट हो जाएगा आपका. ठीक है. और ये फैसिलिटी जो है वो आपकी कहां पर अवेलेबल है? व्हाट्सएप पर अवेलेबल है. तो करेक्ट आंसर है आपके पास टाटा एआईए ने लॉन्च किया है. Next, consider the correct statement about the MPC review about the bulk deposit limit for the scheduled commercial bank and small finance bank. So, scheduled commercial bank, small finance bank bulk deposit limit increase from 1 CR to 2 CR. ये गलत है. इसको 2 CR से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 3 CR. 2 CR से इंक्रीज करके कर दिया गया 3 CR. But the bulk deposit limit for RRB and cooperative bank will be still 1 CR. ये वाला करेक्ट है. Bulk deposit limit 1 crore will be specifically for tier 3 and tier 4 category. This is also correct. The statement 2 and 3 correct हैं आपके. First one wrong है. Why bulk deposit for the scheduled commercial bank is now 3 crore rupee, not 2 crore. 3 करोड़ रुपए का ये लिमिट होगा आपका. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना recent time. Consider the correct statement. So Pradhan Mudra Yojana is a scheme launched by the Honorable Prime Minister of India on 8th of April 2014. Financial year 2024 small business loan given under the Pradhan Mantri Mudra Yojana have crossed the 5 lakh crore rupee milestone. 5 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन प्रोवाइड कर दिए गए मुद्रा में. मैक्सिमम लोन विच इज प्रोवाइडेड इन मुद्रा स्कीम इज अप टू 15 लाख रुपी. तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया सर कंप्लीटली रॉन्ग. राइट. करेक्ट है. वाई कितना लोन प्रोवाइड होता है मुद्रा के अंतर्गत? मुद्रा एबल टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख रुपी. 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें अवेलेबल होता है. स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है. स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है. स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है. ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. सो 5 लाख करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया है मुद्रा ने. स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015. 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था. आफ्टर दैट अप टू 10 लाख रुपी. सो इन द कैटेगरी ऑफ शिशु, किशोर एंड तरुण. शिशु, किशोर एंड तरुण. सो इन कैटेगरी ऑफ शिशु लोन up to 50,000 rupee loan is available, right? Then up to 5 lakh rupee loan is available under Kishore and up to 10 lakh rupee loan is available under Tarun. Current update बोल रहा है 5 लाख करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया है मुद्रा स्कीम ने. सो मुद्रा स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 8th of April 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था. Which bank have partnered with Paymart India Private Limited to launch an innovative virtual ATM facility boosting the बैंकिंग कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर? करेक्ट आंसर है J&K बैंक. जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी रिसेंटली पे मार्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया था टू लॉन्च द फैसिलिटी, टू लॉन्च दिस फैसिलिटी. आगे आ जाइए. विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड गेन GAIN टू कैटर द इंडिविजुअल सीकिंग द लॉन्ग टर्म सेविंग स्टडी इनकम स्ट्रीम? सो करेक्ट आंसर है कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था गेन. कोटक गेन, इसको नाम दिया था कोटक गेन. सो कोटक गेन will have the minimum annual premium of 50,000 rupee, providing the better investment facility with the insurance facility also. तो insurance और investment साथ में इन्होंने provide किया under the gain. Which among the following have launched the most comprehensive women health insurance plan to meet the women unique need? So correct answer है Future Generali Life Insurance ने launch किया है. Future Generali Life Insurance launched most comprehensive health insurance product to meet the women unique needs. Recently, which company decided to suspend one-time investment in the small cap, mid cap, citing the expensive valuation? बहुत important question है ये. काफी बड़ा डिसीजन था ICICI Prudential Life Insurance का. That ICICI Prudential Life Insurance will not be investing the customers money in the small cap and mid cap funds. Small cap mid cap fund में ये पैसा नहीं डालेंगे अपने customers का. And it was a very important initiative announced by ICICI Prudential Life Insurance. According to the report by Brand Finance
Insurance 100, which company has been termed as the strongest insurance brand in the world? in इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बनकर आया है आपके पास LIC. So Life Insurance Corporation termed the strongest insurance brand with the steady brand value of 9.8 billion. इनका जो मार्केट में ब्रांड है वो ट्रिपल ए रेटिंग चल रहा है, ट्रिपल ए रेटिंग का इनका ब्रांड है अभी करंट में. कैथी लाइफ इंश्योरेंस इज ऑन द सेकंड पोजीशन, और LIC को इन टर्म ऑफ ट्रस्ट LIC is on top in the world. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन टर्म ऑफ ट्रस्ट, इन टर्म ऑफ ब्रांड फाइनेंस, सो LIC is on top. आगे आ जाइए, नेक्स्ट है. Who has unveiled the plans to diversify, offering the establishment wholly owned subsidiary called PB Pay Private Limited? PB Pay Private Limited नाम की फैसिलिटी जो है, प्लेटफॉर्म जो है, वो इनमें से किस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है पॉलिसी बाजार. सो PB Pay Private Limited is a product of पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार का प्रोडक्ट है. इंश्योरेंस सेक्टर attracted the massive investment of 54,000 crore in the last 9 years. मैंने करवाया था आपको अभी. What is the FDI limit in the insurance sector? तो 74% आपका FDI limit है इंश्योरेंस सेक्टर का. Aegis Federal Life Insurance was the first insurance company in India which became a foreign insurance company working in India. Which bank recently launched self-subscribing journey enrollment under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? So Jeevan Jyoti Bima Yojana, Suraksha Bima Yojana, these schemes can be subscribed digitally, completely digitally, with the support of UNO application by State Bank of India. तो SBI के सपोर्ट से इन स्कीम्स को ऑनलाइन जो है सब्सक्राइब किया जा सकता है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, it is a life insurance scheme. It is offered to the age group of 18 to 50 age group, and 436 rupees per year is the premium for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, while Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is the accident insurance scheme. It is available for the age group of 18 to 70 years and premium is 20 rupee per annum. तो ये प्रीमियम है इसके अंतर्गत 2 लाख रुपीज द रिस्क कवर इन बोथ द केसेस. दोनों में ही जो आपका 2 लाख रुपए है वो रिस्क कवर है. Which bank and Edelweiss Tokyo Life Insurance partner to offer the life insurance product in India? Correct answer है ESEF Small Finance Bank. So ESEF Small Finance Bank and Edelweiss Tokyo Life Insurance collaborated for the purpose of offering the insurance product. Which of the following life insurance company announced the launch of multi-cap unit link insurance plan, that is unit plan portfolio? तो multi-cap unit plan recently launched by Aegis Federal Life Insurance, which became the first company in India owned by a foreign insurer, right? Competition Commission of India have approved the acquisition of how much percent stake by Zurich Insurance Company Limited in Kotak Mahindra General Insurance Company. So Kotak Mahindra General Insurance Company में Zurich ने acquire किया कितना परसेंट? 70%. Kotak Mahindra General Insurance Company became the second such company in India which is owned by the foreign insurer. ID Major Wipro have acquired 60% stake in Agin Global, a insurtech company. So Agin Global is a insurtech company of which of the following country? तो इंश्योरेंस और टैग के कोलैबोरेशन से बनी हुई कंपनी कहलाती है आपकी इंश्योरटेक. So this Agin Global is a USA based company, and this company 60% recently acquired by Wipro. Wipro ने acquire किया, काफी important है. One Indian software company acquired 60% stake in a tech company which is working in the insurance sector. LIC shareholding in SBI Card Payment Service Limited increased to how much percent in February 2024, acquiring recently little more than 3 lakh shares. So 5.02% हो गया है LIC का shareholding in which company? In SBI Card Payments. SBI Card Payment Service जो company which is a subsidiary of State Bank of India, and this company, now the acquisition of LIC is 5.02%. Previously it was 4.99% था पहले, अभी इसको इंक्रीज करके कितना कर लिया है? 5.02% का इनका
हो गया है एक्विजिशन। Which of the following insurance company have recently launched a new आई ग्लास इंश्योरेंस प्रोडक्शन? ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। आई ग्लासेस का प्रोटेक्शन जो है, आई ग्लासेस इंश्योरेंस फैसिलिटी, सो इट इज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली? तो जितने भी स्पेक्टिकल्स वाले उनको एटलीस्ट ले लेना चाहिए। यूनिवर्सल संपो जनरल इंश्योरेंस, Universal Sampo General Insurance have launched eyeglasses protection facility, insurance facility for the people, those who are wearing the eyeglasses, they can take the insurance against their eyeglasses, eye wears. IRDAI have identified GIC, LIC, GIC and which company as a domestic systematically important insurer in India? भारत में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर के फॉर्म में GIC, LIC के बाद NIA is the third company. Girja Subramaniam ma'am recently appointed as the CMD of NIA. This is the third company in term of domestic systematically important insurer in India. According to the Ministry of Chemical Fertilizer, India will no longer importing urea by the year 2025. Consider the correct statement about Digita initiative. So Finance Ministry launched Digita initiative. Digita stand for Digital India Trust Academy. Main objective is curbing the illegal lending applications. तो करेक्ट आंसर है आपके स्टेटमेंट नंबर 3, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। डिजिटल इनिशिएटिव इज द इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म बनता है आपका डिजिटल, इसका फुल फॉर्म बनता है आपका डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ट्रस्ट एजेंसी नॉट एकेडमी, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ये पॉइंट बनता है। Consider the correct statement about the RBI guideline to specify the utilization of non-convertible debenture commercial paper. So, non-convertible debenture commercial paper, they are the debt instruments of market. इशू करके लोन रेज करने वाले प्रोडक्ट हैं, प्राइवेट कंपनी इशू देम इनटू द मार्केट टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लोन. सो आरबीआई इशूज दिस गाइडलाइन convertible debenture up to 2 year to regulate the short term investment. Guideline will be applicable from 1st of April. Minimum maturity period of commercial paper is 7 days. Statement number 3 आपका correct है, second wrong है, first वाला भी wrong है. It will be applicable for all the commercial paper and non-convertible debenture. इनका maturity period होता है maximum 1 year. 2 year का maturity period नहीं होता है, maximum 1 year maturity period होता है. It is applicable from 1st of April 2024 onwards. Minimum maturity period of commercial paper is 7 days. तो 7 days का minimum maturity period होता है commercial paper का. अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्पेसिफाई द यूटिलाइजेशन ऑफ non-convertible debenture commercial paper have recently accepted which of the following settlement? T+1, T+2, T+3, T+4, T+4. तो T+0 से T+4 के बीच में किसको एक्सेप्ट किया है? इसका आंसर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में. इफ यू वांट मी टू सी ईच ऑफ यू, आई वांट यू गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन की जरूरत है क्या. सो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान. Because 10-20 people are attending the session, it is very difficult for me to manage 1 hour time, giving 2 hour for the content creation, 3 hour time, and even 30 students are not there for the session. तो प्लीज समझिए इस चीज को, चैलेंज होता है काफी ज्यादा. तो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में. अगर लगेगा कि हाँ आप लोगों की इच्छा है, जो तैयारी कर रहे हैं कि सेशन आपका किया जाए, so I'll be there in the session. Thank you for joining today, and for PDF, you can connect with me. For the best offer on the Oliveboard courses, you can connect with me on Aditya Sir GA. This is my Telegram ID. So you can connect with me over the Telegram. Thank you for joining the session, guys. Jai Hind.